Hello and welcome to EduCan. So, dear friends, dear fellow aspirants, so let us start today some current affairs, important articles. These articles are very useful, very helpful for your upcoming OCS prelims and mains examinations. So, before starting the lecture, I would like to urge you, please do subscribe, share, and like our initiation so that we will provide better content for your upcoming examinations. So, without delay, let us start the class. So, the first article regarding your GS2, that is international relations. Okay, guys, international relations played a vital role for your examination. If you are preparing for the UPSC or any state civil service examination, international relations played a vital role. Okay, the option ଅଛି PSIR. PS, sorry, PSIR. PSIR. That is political science and international relationships. Okay. तो इंटरनेशनल रिलेशनशिप जीएस पेपर रे मध्ये बहुत क्रुशियल पार्ट अटे ओके तो सेही इंटरनेशनल रिलेशंस रो गोटे आर्टिकल रही छी ओके कोन अछि ना यूएस विथड्रॉल फ्रॉम हु मींस WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इट्स an important organization of UNO यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन कोन रही छी implication for global health. Okay, and our source kono chi Indian Express. So now let's come to the context. Kono na Donald Trump finally to se शपथ ग्रहण कले एवं से यूएस रो प्रेसिडेंट तो तक फर्स्ट डे रो ऑफिस ऑफ द फर्स्ट डे डोनाल्ड ट्रम्प कोन करजना साइन एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर to withdraw the United States from World Health Organization. तो World Health Organization लो US होउछ बहुत बड़ पार्ट कना US बहुत तारो कंट्रीब्यूशन था US रो WHO तो से उटे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करछथि कि US WHO रु कोन हला ना तार मेंबरशिप को विथड्रॉ कला ओके कि जोटा कि दिस एक्शन हैज reignited discussion surrounding the US rule in global health diplomacy. गोटे बहुत बड़ चर्चार विषय ही ओके तो देखिए हमर कोन पई रीजन कोन अछि बिकॉज ड्यू टू डिससैटिस्फैक्शन विथ द मैनेजमेंट ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक कोविड-19 पैंडेमिक रे WHO ठीक रे काम करिनी मिसमैनेज करछि चाइना को सपोर्ट करछि चाइना को टाइप ऑफ किछि हेल्प करछि जोटा कुहा होतला कि जो कोविड-19 ता चाइना को दायी करा होतला ओके तार जो वायरोलॉजी डिपार्टमेंट रो जो वायरस को स्प्रेड करछ बोली ओके बायोलॉजिकल लाइफ तार लैबोरेटरी रो तो इट से मैन बट जानी कि सेमती करछुली कि तार गुटे इन्वेस्टिगेशन करा जाय प्रॉपर्ली तो ताकू ठीक रे प्रॉपर्ली करनो ता मिसमैनेजमेंट तो करथा WHO ओके तो सेहित पई डोनाल्ड ट्रम्प रागी की विथड्रॉ करिया पई सेउटे एग्जीक्यूटिव साइन करछ ओके सो यूएस रो कंट्रीब्यूट्स सिग्निफिकेंटली तो यूएस ना तो WHO फंड को सिग्निफिकेंट से कोन करते हैं कंट्रीब्यूशन करता है ओके तो जब देखिबा देखो देठी किछि एडिशनल डिटेल्स कोन रही छै ना फास्ट कोन मिस हैंडलिंग ओवर कोविड-19 पैंडेमिक डोनाल्ड ट्रम्प क्रिटिसाइज द WHO for its delayed response to the pandemic and its perceived leniency towards China regarding accountability. दिटा कारण कहले एठी गोटे कहले कि WHO तमे डिले ओके कि तमे पैंडेमिक को डिले करिचो रेस्पॉन्स करिबारे सेकंड जिंस तमर जो लिनियंस देखैछो काहा को चाइना को ओके दैट्स नॉट फेयर देन फाइनेंशियल बर्डन आमे कोन पे एते फाइनेंशियल बर्डन दबो मु कोनी कि ट्रम्प को जदी यूएस स्टैंड्स ऑफ लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर WHO पाखापाखि 100 रु 122 बिलियन US डॉलर से देता है एनुअली देता है ओके
alongside nearly 1.3 billion USD ଗୋଟେ ଭଲ୍ୟୁଟର ପ୍ୟାକେଜ ଦେଇଥିଲା ଫର 2020 to 2023 ପିରିୟଡ଼ ଦେଇଥିଲା କେତେ अमाउंट ଦେଖ ओके ଏବେ Trump deemed his financial obligation as unfair compared to China's contribution China's contribution बहुत कम था ना तो से को जदि तुम WHO चाइना को कौन करछो लिनियंसी प्रोवाइड करछो तो गो ओके अवश्य तांकर जुक्ति भी किसी मात्र ठीक अछि मते लागु एंड आपण देखो आपण कमेंट कर मते कहतु कि तांकर जुक्ति केंद्र ठीक कि भूल अछि then immediate action outlined in the executive order कोन कहला halt in US funding cessation of all financial transfer of WHO ओके जो देखिए आपण देखो किसी अच्छी कोन को implication of the withdraw यदि withdraw कर दउची तार implication कोन रहइबो कोन देखो फाइनेंशियल स्ट्रेन रहू WHO तो WHO ऊपर गोटे फाइनेंशियल भार पड़ जिवो पाखा बाकी WHO रो 20% लॉस ऑफ द फंडिंग ता जति फंडिंग बोलता 20% लॉस हो निश्चित भाव में जोटा गोटे हेल्थ प्रोग्राम को ग्लोबली डिसरप्ट करिवो ऑब्वियसली ओके तापरे प्रोग्राम डिसरप्शन इन डेवलपिंग नेशंस funding cuts could impair immunization and disease surveillance initiative in low resource countries जो low resource countries हैं ताको अधिक एक्स्ट्रा बर्डन पड़ जाए पारे loss of expertise यदि यूएस तरह कोलैबोरेशन को विड्रॉ कर दिए ताले हेल्थ इश्यूज जो रही थी सीडीसी हैला वाइटल फॉर द ग्लोबल इनिशिएटिव ताप मध्ये इंपैक्ट पड़ी तो देखिए डोमेस्टिक कॉन्सिक्वेंस कौन हम निश्चित भाव में डोमेस्टिक कॉन्सिक्वेंस पड़ो वैक्सीन प्रिपेयरनेस तार हूँ कौन प्रभाव पड़ो ओके तो ये आपंकर फास्ट आर्टिकल जदि आम बर्तमान सेकेंड आर्टिकल जीवा सेकेंड आर्टिकल कौन अच्छी GS3 अच्छी इकोनॉमी कौन रही आर्टिकल डायमंड इम्प्रेस्ड ऑथराइजेशन स्कीम DIA डायमंड इम्प्रेस्ड ऑथराइजेशन स्कीम सोर्स कौन अच्छी DD न्यूज कौन कंटेक्स्ट अच्छी द कॉमर्स मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च करचंती डायमंड इम्प्रेस्ड ऑथराइजेशन स्कीम टू बूस्ट द ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडियाज डायमंड इंडस्ट्री भारत रो जो डायमंड इंडस्ट्री अच्छी गोटे बूस्ट करिया पई तार कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़िया पई तो से इनिशिएटिव तो ये जो स्कीम टा कौन करियो ये अलाउ फॉर द ड्यूटी फ्री इनपुट हम जो इनपुट करूछन ना ड्यूटी फ्री तमर कम ड्यूटी लागिवो ओके नेचुरल कट एंड पॉलिश डायमंड का पर नेचुरल कट पर पॉलिश डायमंड पर स्पेसिफिकली दोज वेइंग लेस देन 1/4 कैरेट 25 सेंट्स तो जोटा कि आपनकर अप्रैल 1 2025 रु लागू होबो जाउछि ओके जदि किसी एडिशनल डिटेल देखिवा स्कीम रिक्वायर्स एक्सपोर्टर्स टू हैव वैल्यू एडिशन एट लीस्ट 10% ओके असुन किसी नहीं तो ये अपना आर्टिकल ओके आउटे GS3 रो आर्टिकल देखंतु एनवायरनमेंट को नहीं अछि आसान कंजर्वेशन रिजर्व ACR आसान होछ गोटे वेटलैंड टा कोठी हमर ना डेराडून डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड रो एवं ये न्यूज होछ कोन टाइम्स ऑफ इंडिया रो कोन कहला ना गोटे रिसेंट बार्ड काउंटिंग कराइछि गोटे कैंपेन कराइछि कोठी ना आसान वेटलैंड सेंचुरी पर डेराडून डिस्ट्रिक्ट अछि उत्तराखंड रे has led to the identification of an impressive total 5,225 birds spanning 77 different species. So 177 117 different species रो बार्ड मानु को ये कराइछि काउंट कराइछि this highlights the ecological significance of Assam conservation reserve ओके जो देखिए हमर एशियर टाना जो अछि आसाम कंट्री रिजर्व ये टोटल होची 444 हेक्टर रो ओके ता सहित आसाम रिवर रहिछि
ओके एंड लीडिंग टू इट्स कॉन्फ्लुएंस विथ कार ये यमुना रिवर तो ये जो कंजर्वेशन रिजर्वटा 2005 रे एस्टाब्लिश हैला ओके एवं एटा सेक्शन 36 कैपिटल ए अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 मन अछि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 आस्तिला तो तार सेक्शन 36 ए अंडर अछि ओके तो ये इट इज रिकॉग्नाइज्ड एट द फर्स्ट रामसर साइट उत्तराखंड and classified as an important bird area. Okay, Kadana Bird Life International, BHNS. Clear? तो ये थला आपण करो आर्टिकल्स नेक्स्ट आर्टिकल आपण करो हिला GS3 इकोनॉमी कोन रही छी नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एंड डायमंड एक्सट्रैक्शन NMDC नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एंड डायमंड एक्सट्रैक्शन सोर्स कार अछि BBC ब्रॉडकास्ट कोन रही छी इंडिया स्टेट रन माइनिंग कंपनी तारा कोन NMDC projected to extract approximately 6,500 carats of diamond valued that is $3.4 billion during this current fiscal year. Okay, तो जो extraction ना कोड हबो ना near mine near Panna Tiger Reserve, Madhya Pradesh. Okay, तो it's a fully government enterprise NMDC टा जोटा establish के में हितला 1958 रे. It operates under ये कहाँ under the Ministry of Steel and Government of India. अब देखो है ला Ministry of Steel ये Government of India रे पार्ट ताइरा से. तो 2008 रे या कोटे नवरत्न रो मध्य मिलची. अपन जो सब कंपनी वर्ग में नवरत्न महारत्न या को नवरत्न ये जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज. Okay, it is engaged in exploring different kinds of minerals including iron ore, copper, diamond, etc. एवं ये होची इंडिया रो सबुटु लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर ओके इंडिया रो सबुटु लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर एंड इट रन्स ओनली मैकेनाइज्ड डायमंड माइन इन इंडिया केवल मैकेनाइज्ड डायमंड माइन चला है इंडिया रे क्लियर जो देखिबा ये इनकॉर्पोरेट हैला के 1958 रे गुड क्रूशियल रोल प्ले करची मिनरल एक्सप्लोरेशन ले ये को मिनरल सी करची देख दियो आयरन ओर copper, rock sulfate, limestone, dolomite, gypsum, bentonite, magnesite, tin, tungsten, graphite, with sand. ये पाखापाखी 45 मिलियन टन आयरन प्रोड्यूस करछि एनुअली पूरी जोले छत्तीसगढ़ और कर्नाटक माइंस रे ओके 5 स्टार रेटिंग तर अछि और हेडक्वार्टर कोठी हैदराबाद तेलंगाना ओके तो NMDC रो हेडक्वार्टर कोठी रजिस्टर ऑफिस कोटा हैदराबाद तेलंगाना क्लियर तो ये था आपन आर्टिकल नेक्स्ट आर्टिकल लिखिया कोन रही नेक्स्ट आर्टिकल यस आवर GS3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी कौन रही प्रलय मिसाइल डेकान हेराल्ड न्यूज प्रलय करता मिसाइल कौन इट्स इंडिजिनियस डेवलप्ड प्रलय मिसाइल विल बी शोकेस्ड ड्यूरिंग रिपब्लिक डे परेड फॉर द फर्स्ट टाइम अस्त्र रही केबे शो हबो ना रिपब्लिक डे परेड रे अब किए ना डिफेंस सेक्रेटरी को अनाउंस करछथि ओके सो प्रलय मिसाइल गुटे शॉर्ट रेंज गुटे क्वाजी बैलिस्टिक सरफेस टू सरफेस मिसाइल शॉर्ट रेंज ओके क्वाजी बैलिस्टिक सरफेस टू सरफेस मिसाइल आगो डेवलप कर सिकिए बाबा हमर DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ओके आ कोन पे डिजाइन कराई छी आगो डिप्लॉय करवा कोठी LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इंडिया चाइना बॉर्डर एंड LOC इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर लाइन ऑफ कंट्रोल ओके सम एडिशनल डिटेल्स देखि दियो टोटली ये बेस का परे पृथ्वी डिफेंस व्हीकल ऊपर ओके पावर सोर्स सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट मोटर रेंज केते अछि 150 रु 500 किलोमीटर रेंज को टारगेट कर पाइबो ओके
then आर payload capacity केते अछि 500 ru 1000 kg. Okay, and it equipped with the advanced guided system providing a circular error probable less than 10 meters. It can reach terminal speed केते 6.1 Mach. बहुत स्पीड हाई स्पीड अछि. Okay, so ये तला उतर होची आपनकर प्रोडक्ट विषय में किछ इंपोर्टेंट डाटास. Okay, and ajra I think this is the last article GS2 polity. Trump babu कोन गले साइन कले एग्जीक्यूटिव ऑर्डर टू एंड यूएस birthright citizenship. बट ए जो न्यूज ता आज मु देखि न्यूज देई चार अपडेट न्यूज कोन अछि गोटे कोर्ट ना एको डिसमिस कर दै छी. इट्स फुल्ली अनकॉन्स्टिट्यूशनल. ए जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आड़ जो ट्रम्प ना कि यूएस birthright citizenship को जो एंड कर देबे इट्स एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल. देखो कौन अच्छी न्यूज़ द हिंदू सोर्स আছে हमरो सेही फास्ट डे रे डोनाल्ड ट्रम्प कोन कले ना साइन कले कोन बहुत सारा एग्जीक्यूटिव साइन कर ता मध्ये अछि कोन गोटे गोटे कंट्रोवर्शियल बाय इट आई जो एंडिंग द birthright citizenship फॉर चिल्ड्रन born to parents who lack legal status. फॉर एग्जांपल हम इंडियंस तुम इंडियन देख यूएस रहिছো वीजा रे रहिছো 6 ईयर वीजा रे रहिছো माने कर तुम वाइफ कर प्रेग्नेंट है गोटे बेबी जन्म है तो आज पर द रूल्स जो थिला पर जो यूएस birthright citizen जाई तो आपन पिला को मध्ये सिटीजनशिप मिली होता सेहीटा को से कोन करछथि ना ताकू खत्म करछ मैं करी बोली से गोटे एग्जीक्यूटिव साइन करछ. द डिसीजन स्पार्क्ड immediate backlash leading to lawsuit from various immigrants and civil rights organizations. ओके तो ए जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दैछथि रिवोक करिया पे बार्थ सिटीजनशिप को हला फॉर चिल्ड्रन ऑफ अनडॉक्यूमेंटेड पेरेंट्स. द ऑर्डर चैलेंजेस द ट्रेडिशनल इंटरप्रिटेशन ऑफ द 14th अमेंडमेंट. आकु आपई अमेंडमेंट दरकार बिना अमेंडमेंट किछ होबो नाही. ओके देखियो आपण जो थिला birthright citizenship यूएस रे the principle automatically grant citizenship at birth. जन्म हेल्थ तो ऑलरेडी citizenship मिली होता है. दीटा फॉर्म अछि गुडा होछि जोसोली citizenship based on birth place. जन्म हिचो तो जस्ट मिलियला हमको citizenship मिलियला पाई जोसोली आरो अछि जोस सांगोनिस करो citizenship based on ancestry. तो जदि ancestor रहउ जदी त तो मिलियो applicable to children born abroad to US citizens. ओके तो जोटा आपण करो आकु एडॉप्ट कराइला 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ताकू बर्तन ताकू एग्जीक्यूटिव इयर गई ताकू बर्तन अनलॉफुल करू जाउ के डोनाल्ड ट्रम्प. ओके सो आई थिंक these are very important articles regarding your upcoming examinations. I think आज लेक्चर भल लगी लाइक करेंगे शेयर करेंगे सब्सक्राइब करेंगे. ओके सो आज पे जय हिंद जय जगन्नाथ.